ऐसा ऐसा आ रही है नीचे। मेरा टारगेट होता है 100-150 इसके अंदर गोल्ड। गोल्ड भी मुझे बड़ी अच्छी चलती है। हाँ सुबह कैंडल्स तो गोल्ड 30 में सुबह हाँ जी स्मूथ करती है उसमें। ज्यादा मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क मार्केट में टाइम पे होती है। ये वो नहीं है। People trade it. आ रही है क्या आ रही है? Yes, तो बड़ी slow है। Minus 9, भागना है ऊपर बस। इतना खेत कभी दे -70। Big number. right, let me pin this, let me get this going. I think we're good, we're good, we're good. 24 refreshed, 25th refresh. Forex Factory, NQ sheet, Friday areas. Circle to the left. This is on pressure. End of the Fibonacci box. 23,220, slightly higher. Okay, I think we're good here. Let me just double check this screen. आपको आ रही है जी? Good. Yeah, you guys are good everywhere. Good. SRE setup is built on 3020. Okay, before I do. Yeah, that's up here. All right, let me double check. Audio is good, video is good. Good on Zoom, good on YouTube, good on Telegram, good everywhere. That's good. So we're good. Okay. I think we're good. All right. Good morning, everybody. Friday, July 25, 9:05 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, in person as well as online globally. We wish you a happy Friday as well as a happy trading day. Anything we say here or I say or talk about trade is not financial advice. This is just for informational, educational, and entertainment purposes only. I'll keep you entertained today from 9 a.m. Eastern to 12 p.m. Eastern. So 3 hours I'm with you. Let's take a look at what is happening with market. Today, 8:30 a.m., durable goods. It was medium impact on Forex Factory news. One is green, one is black. So I didn't see a huge movement. Price is all-time high of Nasdaq, all-time high of ES. I had shorted from 21 last night, and I made quite a bit of a chunk, 20 point, and I got out. So 21 area that I was waiting for yesterday came really late last night and actually gave me some points. So that was yesterday's, I believe, R1, R2. So, but that I took it in and I made quite a bit already money from the last night, but that's okay. It is what it is. Apex is on sale, 90%. Use the coupon JSK DCPTR is the code. Bullnox is on sale. However, Apex first time is 90%. Renewal is your 80%. So just Nasdaq. What did Nasdaq do last night? We have a new number. 23441 is the 442 is the high. 23346 is the low. So approximately 100 points it moves. So 470 to 490. I'm still sticking this time.
So the number I am planning today is somewhere around 500 and so I will go somewhere around 550 is my plan. So 550 to 500 if it comes before 2 o'clock, because from 2 to 4, there's no crazy earnings today. Let me double check. Yes, nothing major. We do have crazy earnings coming Wednesday for Meta and Microsoft, and then Thursday for Apple and Amazon. So nothing to worry today for earnings that could shake the market. So where are we? Are right now standing in S1. I am not taking any S1 on any market, neither S1 on, if you want, you can, I'm not. Actually, it actually got done. It touched 6402 and it went back up. So our area of S1 ES is done. And right now we are inside S1 pivot of intraday support 1. We are inside the Nasdaq. So SRES is being built on 3020 right now. You guys can see you have a higher high, higher low, first lower high, black candle to the downside. So more probably. So I am planning to short. Personally, 550 is something I'm looking at, because let me open my depth of market. Give me a second. Let me give you some. Sorry. So ES, where am I going? ES. I'm 35. So ES, I'm planning to do at 35, 64, 35. Nasdaq, I'm planning to do 23, 550. So somewhere, even you can do 525 as well, but 550 is what the odd number, even number that I am planning to do. Screen is not sharing. Okay, I have shared the screen it is being shared. It is. Full screen is being shared. 35 for ES. Sir, ES के लिए 35. 64, 35. And I'm taking R2. R1 still could work, but these guys could kind of go crazy again, trying to make a newer high. So high to low again is our plan, because if they push today's Friday to higher high, we could see literally 64.50 today. Could see it, because it's not that far anyway. It went as high as 21. So and extra mouse, sorry boss. Unless कि वहाँ lost and found में आपको कहीं मिल जाए. में भी 35 पे रख हैं? Nasdaq ही रखता Nasdaq ही करें, क्योंकि वो 450. Another mid band worked right there. Beautiful mid band trade. So today we have no Daniel's brief, so you guys are stuck with me. So in a good I hope so. Sorry? मैं 10 o'clock करूँगा, क्योंकि right away जो है ना अपनी trade देखना होता है. मैंने क्या करना क्या? वो ट्रेड प्रॉफिट हो गया. हो पास हो गया. तो अभी आपको ईमेल आ गई है.
ओके आप मैं अभी खुद ही बता देता हूँ लॉग इन करें टेक प्रॉफिट में sorry English बोलना है because it has to do my so log in to take profit you will see credits so आपने 5 days में पास किया so 25,000 वाला congratulations there is no fee because it's included inside your so first pullback first mid band worked so if you took it you took it you didn't it's okay कोई बात नहीं बहुत मिड बैंड्स आएंगे जिंदगी आपकी उनकी गाड़ी की प्लेट मर्सिडीज की मिड बैंड है बिकॉज इतने मिड बैंड्स आ रहे हैं कि लाइफ ही मिड बैंड हो गई है so let me fix Murtaz all right Murtaz's Zoom is available now you guys can if you log out log back in or just refresh Murtaz's stream is live Happy will start doing his Zoom starting Monday again. So very soon we're planning to get his Zoom as well. So log in कर लिया. So go under Pro. No, click go to Pro. And it says yes, you have to pay 130, but don't worry about it. Just click OK. And at the bottom, you will say pay using credit. थोड़ा सा दिखाइए. Yeah. So पहले वो नीचे लिखा credits. Credit. नीचे आया credit. हाँ तो click करें. And yes, do you want to pay with the credits? Done. So now you will sign 2 agreements. So you will, just like Legends, just like Apex. So you guys can see my Zoom screen, right? Just double click it, maybe. My Zoom screen is working. Yeah, I am sharing it. Let me say stop share. Let me share it again. Share. Yeah, it is being shared, guys. It says you are sharing screen. Okay, let's see which way market will go approximately at 9:30 when it officially opens. Yeah, Zoom is working. Gold, wait, let me check for gold contract. If we're still doing gold. We're in August contract. Gold is still August. Don't change it, please, guys. Good morning. So, Mukesh bhai, thank you. Gold, you can change it and trade, but you will have area. So, here's the trick though. If you are always in a previous contract and in a new contract, let's say softwares are telling you gold August contract, but you want to go into December contract, no problem. Just look at the price difference because it's like a magnet, moves the same. So if the gold, abhi current price kya chal rahi hai, if somebody goes into, yeah, for areas are based on August, but if you want to trade in December contracts, just add and subtract that number. That's it. There's nothing because area it is like a magnet price. There's a spread, but so if you are given 33.80 for expected high on August contract, of course December contract has a price difference, $5, $10. So first watch both prices. So open up a DOM or open up your what do you call it? That order ticket. Watch one for August, one for December. It's a static price: $6, $8, $9 difference, right? So I can go right here. Let me show you on the screen. So it says, look, gold is gone from August to December, right? So let me update it. So I updated. Now let's look at the price 3339.40, right? And it's 3396. So how much is the difference? $50? 3396 versus 3340.
बड़ा फर्क आया जी दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में वो इसका So now just add that value inside your difference and then trade based on those numbers. So 3395 versus 3338. So $57 difference is there. So if you're looking at expected high of 38, just add 57 to it. So your expected high will become 34.37. It's very easy. So whenever you have a contract difference rolling, and you don't, if our areas are for previous contract, but your Ninja is going into the new contract, no problem. Just look at the spread difference, add it, and it will calculate it. So similar way, when we do spot pricing or cash pricing, just add and subtract the number because sometimes people are trading CFDs. Sometimes there's a cash gold price, spot gold price. So there's 3 or 4 types of gold prices hovering in the market. Futures, futures contract, meaning December contract. You could be trading maybe the next contract in February 2024. It doesn't matter. Once you have the levels, just adjust it accordingly. So you just look at spot is right now 33.37. 33.37, right? Yeah. The futures is 33.37 as well, right? So there's no difference. So you will use the same level, same level. So a lot of people are using our values that pivots, and they just trade on their CFDs and trade on their spot. You just say, oh, computer predicted 33.80. What is my spot price? Add that difference or subtract that difference, and then you will sell spot from there. So for the day, will Yes, because futures is ahead of everything. so it's like Yeah, it's magnet. So, difference will but it reduces sometime, but it's not that crazy. It's not like going to like Nasdaq goes sometime up and down, maybe 30 to 50 points. It gets the from futures to CFD, it gets closer, and the spread gets apart. But generally, it stays pretty consistent along the way. So when I do FTMO, I'm looking at Nasdaq this value. I don't care about FTMO value of CFDs. I just say short or long from these numbers. So wherever this value reaches first, I trade my spot, CFD, cash based on these numbers. So this is a, yes, you can still go to, go back to August manually. It is being still traded. I still see volume 3396 is there. All you got to do is just change this to gold August. So now this is the difference. So you can just change your instrument. What will happen is eventually the old contract won't get traded anymore, and then your broker will say, all right. So it's very critical. Like, so we do live, right? Our ES contract somewhere around September 1st is going to say, hey guys, we're moving to December. So September 2nd, September. So please don't get stuck in a live trade very close to expiry, because you do a bad move 4 months into it, you will get brutally stuck, right? So and generally they will hold the price in a certain place, because I have a lot of guys who are short or long inside that old contract, and they want to kill those. So that's how you play with the areas and the contracts and everything else. Yes. लिखे ना वो अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें. वो लिखा है कि इफेक्टिव टुडे, आज की डेट डालें. हाँ, इफेक्टिव डेट वो कह रहे हैं. वो ब्रैकेट में क्या लिखा है आगे? ट्रेडर नेम. अब आपका नाम, मिसेस का तो नहीं लिख सकते ना. आपने पास किया ना. एड्रेस, हाँ जी, बहुत आसान है. वही जो आपने लेजेंड के किए हैं, एपेक्स के किए हैं, बुलनॉक्स के किए हैं. 15 का. और एपेक्स का भी कुछ सस्ता ही है, लेकिन एपेक्स में only thing I really like about Apex is the minimum target is $50 to make. You know, those PAs, they don't have, plus they allow you 20 accounts. So that's kind of a good. So, alerts is. And जी दोबारा लेने के लिए वैसे किसी तरह हाँ वही प्रोसेस.
बुल्लक्स लेकिन नई ईमेल से नहीं, उसी ईमेल में लॉग इन करें और सिर्फ अकाउंट साइन अप पे क्लिक करते हैं. So you don't have to create a new email, new password. Okay. Just a new, just same email, because otherwise you will have to do. Sir, a question regarding the areas. Yes. जो yesterday मैं नंबर का वेट करते 10 बजे के बाद मैसेज मिलेगा मैं वेट कर नहीं नहीं, मैं आप सारों को 21 कह के गया था, चीख चीख के कह के है. बड़े जबरदस्त तरीके से लगा. Experience है ना, तो और तो कुछ भी नहीं है. So before, I gotta do this in English. Before I wrapped up this class, I asked everybody, my personal numbers are 6421. First attempt, it went from 18. Second attempt, it bothered me, went from 20. I तो एक टिक से रह गया. So it's okay. But it's okay. I said I'm not changing my discipline. I left it at 21, and it came रात को 3 बजे or somewhere. It came there, and I woke up with, I had placed my, actually, for, it gave me $425. So 425 divided by 50, 8.5 points. So 8.5 points were done from that. So that exact number it comes. तो ये तो नहीं कि if 18 था, then that's not right. No, 18 came in the morning, right? So I just moved it slightly above, because yesterday's areas were, so like today, I'm planning 35. I will place my order and just, that's it. 35 is the number for ES I'm planning. Now, Nasdaq came very close to our number, that what I was hoping for, 450 to 500, but it didn't come. 441, it just bounced down. So today's, hopefully, but let's say if this area doesn't get hit by 5 p.m. today. I doubt it. Let's see what happens. Market is not pushing crazy highs, but at 9:30, still Sunday it's valid. Oh, So that area will be getting valid until Monday morning at 9 o'clock. So anything that's left on the table is still valid. Yeah, areas are very close to yesterday, but R1 and R2 shift, because we don't have a newer, a higher high, because only from 520, 425, for 23,425, it went to 23,441. So not a crazy move, but it's okay. Crazy or not, we wait for number, because we don't have much. So let's take a look at what are we doing. सर बुल्लक्स में कहाँ पे जाके सर ऊपर टॉप राइट पे अकाउंट साइन अप. वो अकाउंट तो खोल लिया. नहीं, अकाउंट वही पुराना वाला ही खोलना. वो ऊपर टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है अकाउंट साइन अप. और देन क्लिक द $50,000 account and then code super areas and it will show you $15. Excuse me. Thank you. All right. Natural gas is going into September as well. So same formula. If somebody's trading natural gas. Oh, another good announcement. Not really good for you guys. We have changed our live chat into a ticket-based system, because the number of staff we have, 8 of them, everybody's chatting, queue is getting bigger. You have a question after hours. So we will have, so in person, you can talk to me here, any desk, and I will do it for you. So I'm doing 3 jobs: market analysis, picking up, any desk, everything, right? So but after hours, if you do, you won't get a live chat. You will get a ticket back in your email. They will ask you when is a good time to do an AnyDesk. So it's because what is happening, you go and chat, and people were saying, I'm sitting on a chat for 20 minutes, 30 minutes, it's not working. And so we said, no more
first come, you will come, and everybody will get in queue, and we'll fix these gaps very soon. If anybody wants to sit at other offices for Win Lifetime, they can pay $200, sit with Murtaza, sit with Happy. We are planning that as well, because some guys do want to sit in the other offices. It's $200 a month to sit with them. So that's been approved. They're again, we're live, right? No, they're live. They're like both. So we have 3 floors, right? So you guys are part of the business class because you have paid the software. But why do we have to go in person if we can see them online? Yeah, some people like to. Some people like to. Right. So I prefer to not come into office. I would like अगर मुझे बस ये घर में काम हो ना तो meaning के it's much more because a lot of time when you have 50 people here, other time to trade over it नहीं चलता. Trade over is coming. Oh, so many people are logging in. My Ninja is not working right. Idea is to bring you in for a couple of months, train you, and then you're done, right? I have more users connected through 5 platforms who are watching us online, comfort of their home, and they know how to enter a trade. One more mid-band worked, by the way. हाँ नहीं नहीं नहीं, वो कोई प्रॉब्लम सिर्फ बता रहा था कि एक मिड बैंड और अभी yeah, that's fine. That was because so let's see what happens next. I'm waiting for certain numbers, and the market will open officially in about a minute, the stock market, and we'll go from there. So pressure is down, and Yes. I'm just trying to understand. Pressure is down, and it's open below PP. Yes. Would that mean More chances are it will go down. More chances are. so we can consider that the chances that 64.22 is bad number to sell? Yes, yes, That's yes. the first number it That's the first, after the areas, that's the first resistance, 22 to 25. Our all time high is 21. So if you want to risk first before at 21, you can. I am not. I'm waiting for 35. Oh, Personally, for the area that I'm taking one level above because lately it's just kind of goes crazy, you know. All right, we are officially in the war zone now, meaning market is open. Where are my orders? State. कुछ नहीं हुआ मार्केट नहीं है Gold ऊपर गया. You wanted to go up, right? I wanted to go down Okay, yeah. So 1% is winning. नहीं ये तो नहीं गए अच्छा अच्छा. So was that an area or something you guys took? Okay. And here at Win Lifetime, you wanna just worry about 100 to 150 a day. You can sit with Majid Bhai. He will guide you with actual entries. So you don't even have to worry about because that's what all of these guys are trained for. 846, somebody. We're stuck.
What's the plan? 23,550. Sell. And yeah, 3020 is giving us SRES. Let me open up my depth of market so we know where users are sitting. Yes, I'm in queue. Almost close to bounce from S1. Yes. So the night session became 340. All right, wants to go up. 374. Okay, question is where to buy. I'm in queue. I will take 23,000 and 100. 23,100. That doesn't change for me.
Am I short from somewhere? I think I'm short from somewhere. So again, my plan for Nasdaq is 23,550. That's where I'll start taking my risk. I know it's quite a bit from here, but pressure is being released slowly. S1 is being tested again for, what do you call it, for Nasdaq. First time S1 is being tested. लॉन्ग किया था पोजीशन में जाके ओह दैट्स ओके कोई बात नहीं हो जाता है इसको क्या ऑर्डर कर लो कनेक्ट करो वो तो ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है सिंपल तो नहीं कर सकते सिंपल तो देख लो दो दिन मेरे को चूजन चलो मैं इसको कर पोजीशन जाके काम में शावर तो होगा सिंपल अच्छा 3020 has been stuck on this candle for quite some time. Mid band is really flat on 1510 chart. On ES, there's nothing really happening there. कैसे काटूं इसमें वहां पे शो नहीं हो रहा वहां पे तो रियल अकाउंट में हाँ राइट क्लिक करें और फ्लैटन ऑल राइट क्लिक करें ये पोजीशन राइट क्लिक अच्छा क्लोज पोजीशन हाँ दैट्स इट 150 तो हम चलो कुछ आए I have both these highlighted my actual account. चल मैंने this बोल देंगे आप Sir, did you take the average amount of bond too? That's what you yeah say. yeah in between थोड़ा सा क्योंकि price बहुत करीब है इसलिए right?
He wants to go up. Again, Nasdaq is 360. What's the difference between, it's almost 6, 8 divided by 5, not enough. Yes, I'm reading on Intraday. Yes, yes, everything is stuck. Okay, 376. $380. ES is stuck. Completely flat consolidation, stuck in one bar in ES. So let's see. Where is rest of them? Where is your Russell has gone to S2. Your Dow is getting towards S1, below S1. So more chances are it should go down. Again, more chances.
Because almost Russell is gone and touched S2, and our area for Russell is done. Yep. So Russell is officially done. Nasdaq का कौन सा नंबर होगा? सर 550 का वेट करो. How 1575, right? Subscription $15.75 Every month. वो खुद ही कटेंगे. तो अगर आप 30 days में finish ना हुए, so they will redo it again. Okay. So अब आप बुलनॉक्स 10 minutes में खोलेंगे तो हो जाएगा. वो तो हो गया. Yeah, done. वो मैंने actually अभी check किया, subscribe हो गया. Yeah, every time it's subscription. Okay. Because some people don't want to finish it in one day, right? Okay. Comparison one day. Yeah, bullnocks is one day. 3000. पूरा 3000 सर. 5 लॉट फेंकें एक्सपेक्टेड आई से Nasdaq में खत्म करें मुसीबत, या इधर या उधर. लेकिन so some users go crazy and they say, all right, because Apex is now 1 day sale as well, so. $91 पे चला गया जी. So still wants to cross some numbers. ES is really stuck on that one bar. कैसे जाए? ये किसी तरह भी ले जाएंगे 1 मिनट में. लगा अभी 35 पे खड़ी हो. $90 off, code JSKDCPTR. That's slightly गई है 95. Thinking में Nasdaq क्यों नहीं करता? Two, three, four.
उस गोल्ड के ट्रेड से एक ट्रेड से I saw -700 at the end of +240. गोल्ड पे Gold but All right, we're officially in 400. score 50 से करना शॉर्ट 550 से सर, अभी तो बहुत दूर है. यूटिलिटी इंडेक्स दे सकते हैं. हम जिस पे आपका नाम हो, so utility bill. जैसे फिबोनाची का अमाउंट देता है उसको पहले भी हम ट्रेड कर सकते हैं. हाँ, पहले जाके लगा दें, लगा के पहले जाके ऑर्डर लगा दें अपनी एटीएम के साथ, नो प्रॉब्लम. क्योंकि मैंने देखा जब वो उस रेंज पे पहुंचा ना वो ऑलरेडी पॉइंट दे चुका है. हाँ, लेट हो जाता है. हाँ. Correct. So it went as low as 330 Nasdaq and went as high as 394. So that's the range of morning. 23, 330, 394. There you go, 400 now, 403. 405. Just like yesterday. S1 and then just shoot back up 175 points. ES में 30-20 को अभी भी हम बेरिश ही गिनेंगे. अभी bearish है जी, अभी तक. That's the third candle happen and then shoot back up. It's still bearish. So your fib boxes are sitting at around 17. So let's see. 15-10 ने तो हायर हाई दे दिया. It doesn't matter. So single bar with magnet pen. So Sorry? number Sin number देना. सर जो एरिया का वेट करना बड़ी चैलेंजिंग चीज है. तो उसके सामने नहीं बैठना होता, बैठ के बस को टिकटॉक लगा लें. वो ठीक है, उसका और कोई तरीका नहीं. But sir, last night I was waiting till 10 o'clock. I was like, forget it, I'm going to be back. I have a jigger to keep it down. I think we're blowing up the Yeah. No, you have to put a 18 जब कुछ आगे जब लॉस पे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दी. That's why. But you know how the 18 strategy works, right? वो किया हुआ setup That's not yours. That's for US. Yes, yeah. SS is US. थोड़ा महंगा ऑर्डर थोड़ा सर्विस की कमी लेता है. That just पहले ट्रेड में तो क्या हुआ लगा के तब ये तीन ही हुआ नहीं मैंने लगा सो गया उसके. Is there? मार्केट चल रही है. बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी बना ली है. 4 मिनट तक गया जब तब से मैं ट्रेड करा उसके बीच में पॉइंट्स बनाए हैं. जब वो पिवट पर टच किया तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया था मतलब पिवट क्रॉस करके अभी नीचे ही रहेगी. मैंने बंदा 2020 के हिटिंग गेस्ट आ गई. मेरा क्राइटेरिया नहीं बनाना. मैं ऑर्डर लगाना है तो सारे आगे जाओ. तुम्हें उठाओ तो जब असर पड़ता है
Do you need to download this or not? No. It's automatically done. दोनों मैच करते हैं ना टैंडम जाना so You have to do them until Monday time. For what? After the, Done. It's instant. 5 minutes. I will be ready. oh, 5 minutes. एक मेरा बिल्कुल पकड़े हमने बस सेकंड सिंपल अच्छी है All right, 10 o'clock candle. Let's see. ये on preset send. Yeah, you should sign this document too. There's 2 to sign. अच्छा वो आप मेरे से कर रहे हैं मुझे याद रहेगा थोड़ा. All right, broke previous. That mid-band kind of worked. yes Yes. doesn't match colors Ah, sorry. कुछ भी नहीं है मैच कर 15 times changing color so quickly still बड़ी भागी एकदम भागी शूट कर So, right. Nothing at all. Sorry? थोड़ा है चाहिए. Yeah. ये यहाँ पे क्या What's the question? Questions are? management legal. No, just read NA. It's not going to be. No. Nothing here. Just put NA. NA. On top. Yeah. On say not available, not applicable.
लोअर था से आ रही है ये जाएगी लोअर लोग लाने क्योंकि जो लोग लाने जाएगी 200 मिलेगा All right, not doing anything. Stuck at 400 and stuck at, all right, something moved, coming down slowly. Spring. इसके लिए इससे 15 डैश Between 9 to this bit of a चार्ट क्यों नहीं करते chart was long. तो ये तो थोड़ी पागल का मसला है Just नीचे गई तो चाहिए. इससे नीचे 80 हो गया 40-50 तो मैंने गई 50 गए दोस्त के पास डबल लो 40 पे आने को गए 40-50 100 Okay, looking at the order book, where are the orders for Nasdaq? Do we have quite a Oh, I don't know. Somebody just dumped more contract. That's all. Sorry? Chaudhary उठ गया झटका लगा बहुत जोर से That came out of nowhere, literally, or maybe some volatility. कुछ दिया नहीं ना उसने कभी एक दो So stuck at 400 and stuck at flat midband. If you look at least the midband line, there's no curve to it. So that's called price is consolidating. So what computer our software is doing is recording this consolidation line. This is called a cluster. So maybe 2 years from now, 1 year from now, if price goes up and ever comes down, these numbers will work very good support. Let's say price goes to 67.30 ever. Of course, जानी तो है कभी जाएगी. So when it's coming down, these numbers will act as a good support.
So wherever the price gets stuck and goes flat, future will give you a good. But the issue is right now it's not doing anything at all. Zip, zip, zip. So might as well not trade. Yeah. Especially Nasdaq. It's got only a there's no move to it. Even this is tough. So Let's want to make sure everything. हाँ हाँ भेज दें कुछ हुआ तो आपको ईमेल कर देंगे फिक्र ना करें उन्होंने आपको पैसे देने आपने नहीं देने $550. All right we got some movement some direction 406 410 was a previous high of morning So देखिए so $412 413 So it's got 2600 हैं 2600 2000 to 1500 and anything after 1500
You can do it one day if you like. There's no limit. So live pressure is same. Yeah. So red and green. Hello, Ji. ट्रेड वेट में भी सिमुलेशन में जाना है या Simulation. No, there's 50 ES is not, it's crap market. Honestly, Ben is flat. So today, not touching ES yet because 30-20 का हाल तो देखें. 3 candles up, 4 down. How are we gonna trade? आज स्टॉप लॉसेस अभी तक तो उस तरह नहीं. हाँ आज, लेकिन वो इतनी ज्यादा फ्लैट जा रही है.
यार फ्लिपकार्ट में झंडा है उधर कलर मैच नहीं कर रहा। हम्म 390. Yeah, stuck at pivot. Just 30-minute. Back to 400. So what is trading up today? Tesla went up $8. Meta is up. Google is up. So अभी गिरा है ना काफी गिरेगा तो उठ भी गया 23 divided by 8. Almost $3 difference. गोल्ड भी स्टॉल हुआ पड़ा है नाज़डैक ही जा रहा है S&P स्टॉल है ये तो धान से पहले जो शांति होती है ये बहुत ही है और जब गिरना शुरू करेगा ना तब अंडरस्टैंड मुझे लगता है कि इन्होंने ना स्पीच को उसको आप ही रखना ये इस महीने के एंड तक टुडे थर्ड फ्राइडे ऑन द मंथ नवंबर थर्ड फ्राइडे इसमें दक्षिण वो होता है ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है एंडिंग आज कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग the thing is third friday of the month is always ऑप्शंस एंडिंग options to ending already again but the pattern means that market goes in a diamond shape it goes up or down in one direction long और ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी या फिर नीचे जाएगी और ऊपर आएगी अभी हो गई है स्टॉक ट्रायंगल बनाएंगे जो भी बना रहे हैं ऐसा बना है जैसा हार्डली एनी मूवमेंट है ये मिड बैंड भी चलेगा मैं तो बना है नहीं मैं भी नहीं रहा पिछला मेरा ये Nasdaq है ना घंटे से बैठे हैं उसने भी एक टेक्निक है शॉर्ट उसने कलर नीचे लोअर चेंज हाई किया बनाया एक टेक्निक है शॉर्ट हायर लो बनाया and just wait अच्छे पॉइंट है अभी के 50 पॉइंट शॉर्ट पॉइंट है मोमेंटम में आता है Come on, move. Which way? Come on, pick a number. Go up or go down. Like it's either go to at least 450, 470, my R1, make a new high, or just call it a day. Nasdaq में तो चल रहा है एटलीस्ट 30 ईयर से ज़्यादा चल रहा है मिड बैंड ये चलेगा नहीं मैं नहीं देता पर ये भी मेरे लिए टू फास्ट नजर पे नहीं
$87, any orders on 87? No. 79. So 60-minute, yeah. Back to 400. The range is so little. Went as high as 413, 415, and as low as 330. Current session. This midband, I think, worked, but one chart is still magenta. So how can you take a trade? This is the time where you assess yourself and say, market is in consolidation. I'm not going in. Because what happens is you will get frustrated by waiting outside. It is the most difficult part in trading is to not trade. सबसे मुश्किल काम ही है. आपके सामने मार्केट घूम रही है. So इनको बोला मैंने स्ट्रेटजी बनाई है इस मार्केट की. लॉक किया. अब हैंडकफ्स भी प्रोवाइड करें हम. So the Bluetooth device, I should have it with me. Everybody gets handcuffed until, or mouse stops working or something, right? Doesn't matter. Yeah. So The electric shock has to be tested. जानवर नहीं है पटा बना हुआ है. We have to train our muscles. Brain is a muscle. हम जानवर बन के लॉस ले सकते थे, जानवर बन के डिसिप्लिन की कर सकते हैं. Most difficult part in trading is the discipline part. There, 60-minute, for example, has divergence. It has to cross 442 to make a new high. Actually, 490 still could work as a good number, but you don't have to go as crazy as 550. But because it has slowed down, I think. So 490 upper range is my 60-minute upper band. So the 60-minute upper band is sitting. 10 में ये कैप ट्रेड बना था. हाँ जी बिल्कुल क्या नहीं था. इधर तो ये रिस्क था. मुझे आज तो नैस्डैक ईएस तो बिल्कुल सीधी चल रही है. So वही 1-2 पॉइंट का गैप है. Because honestly, everybody's scared for a big drop, right? So that's why nobody wants to buy. So only retail investor may be. वो तो फंसे ही रहते हैं कैंडल्स के ऊपर. Yeah. So for that, prices. इतनी स्लो नहीं. So 60-minute upper band, I may revise my entry around R1 from 550, lowering it down to 490 because it's still not climbing right after. Because from here on, still we have $90 move before we get into our R1. Let me see how many people are sitting at 500. Let's see, MNQ. NQ dot, let's see, MNQ dot CME. $500. Oh yeah, lots of guys. At least 500 people
or in that exact number. 500 पे बेसिकली 490 और 500 के दरमियान बहुत बड़ा बैच है. These are retail investors, by the way, not banks, not institutions, because we don't have a commercial license. This is a individual retail orders. Because CME only gives, unless you're a hedge fund with $1 billion, you may be getting institutional depth of market, but not retail. Retail only gives us the retail orders. And so around 500, we got some, from 490 to 500, we have quite a few orders. And then let's go up. And then again, that's not as many on 550, but definitely from 490 to 500. If I was to total them up, how many orders would be totaling from here? Come on, 408. Four, 6, 4, 7. 10:30 candle, half an hour candle open. Let's see. अब 400 की जान नहीं छोड़ा. 400 को पकड़ लिया. मान जाओ यार, सीधा 22,000 पे जाओ. So buying, where could I be buy? Where it could be a good buy? So if I look at cluster wise, $23,225 for today, only for today. Before two, if it falls to around that, 23,225, because that is your 60-minute lower band below S2. So if it falls ridiculously, we should be looking
So that's far though. So 23,400 minus 23,225, almost $175 difference. So oh, somebody woke up. उठ गया, हो गया जी. Let's see who woke up. है? नहीं नहीं, अभी कुछ शुरू हुआ है मार्केट में, किसी ने आके हलचल बचाई है. Let's see. Craziness, man. Still crazy. It's fast. So, but after the छोटे से सब था काफी जाते हैं तो अभी मैं 490 को देख रहा हूँ, क्योंकि upper band of 60 minute, if anybody is planning, my personal opinion is 490 to 500. But look, the levels are so tiny, from 490 to 540 to 560. So वही R2 वाला काम ना हो जाए फ्राइडे को. नहीं 490 ठीक है, ठीक है. ये 550 जो है ना, अगर वो गई शूट करके तो 490 पे रुकना चाहिए. That question is, I hope now it's supposed to go down. Thank you, ji Mukesh bhai. Everything is supposed to. It's at least it made a move. That's what we were kind of. It didn't quite touch mid band. We're up to 12. All-time high is 21. Only 10 points from here. New records. So let's see. So, because R1, R2, R3, very little. यार बैठने का क्या होता है नीचे शिट 116 बड़ा भाई 15 वाली नेगेटिव पोजीशन Maybe by 10:45 to 11:15. तो से R1 है ES था 35, sir, R2. R2. नीचे क्यों हो रहा है Now stuck again.
very annoying to see consolidation. All right. That must be. Yeah.
All right. That got fixed quickly. All right, should be. Okay now. सारों में एक सब अपने लाइव अकाउंट में नहीं है, बाकी तो हर एक में. To walk around a little because it's not moving at all. Huh. 2000 नहीं, ये 50K का अकाउंट है, तो इसमें डिफरेंट अकाउंट. 50K में 2000 है. सॉरी, 1500 आओ एक दिन में बना लो, 10 में बना लो, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं है. हो जाएगा, लेकिन पहले आप वहां पहुंच जाए. हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, हर तक पूरी दुनिया में भेज सकते हैं. बस उस ब्रिज पे पहुंच जाएं, फिर मैं आपको क्रॉस करना बता दूंगा हाउ टू गेट दैट. So the new high it made is 423 now for the morning. आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है 423. Expiry in the market. How do always comes up? What is my repeating? I don't know why it's repeating. Give me a second. What did we do to fix the mic? No trade for me officially yet because there's no opportunity. No opportunity, no trade loss. Just saying.
Yes, sir. H. ना जो स्किन है ना उतार के ले जाएगी, खून भी नहीं छोड़ेगी नैस्डैक का। हाँ, so, वो हमारे पास है ना स्टूडेंट मारुख जी, ओवर बाट ओवर सोल, ओ 30-20 खोलती हैं वो जो तार तार। ऑलराइट, ओके, यस, 15 टाइप के Nasdaq है। दैट इज इनक्रेडिबल। वो bought हुआ, sell, वो sold हुआ, 15 she goes, Crude? Yes, Nasdaq. I'll be right back. Just gotta grab some water. Market is not open. I gotta take these.
Sorry. Yes. Okay, 1 sec. It's all psychological. Nothing. Yeah. What did I do? Oh, sorry. The back part. Oh. Usually you don't put together. No, I know. I was like, बैग में सोच रहा था किसका है ये बैग कोई नहीं आ रहा इसका बैग का So everybody's putting it from all the directions. What do you no. I was like, this is not possible. I didn't bring my bag, but it's one of those days. So what are you? No, काम पर घर के काम इतने हैं. There's another one. Groceries and this and that. But if I didn't have to do this floor, I would be out of here in UAE so fast. Because you Just get take your internet with you. no, but then you know, कैसे भी मना है mid-band चल गया. चल गया नहीं ऊपर निकल गया था अच्छा. फिर मैंने हटा दिया मैंने कहा ये तो निकल गया हाँ. और वो नेक्स्ट कैंडल पे मार ठीक. No. तो कई बार मैं ऊपर जाकर उसको पकड़ा देता हूँ अगर वो छोड़ No. टच करता है ना मैं कहता हूँ ले जा भाई आई डोंट नो कई बार अपने आप हाथ छुड़वा लेता हूँ हाँ नहीं मैंने लगाया था वो ऊपर जब निकल गया 2-3 टिक मैंने कहा फेल मिस हो गया मेरा That people using the way. Why, like many, like they don't like tell us, Ethel something. Like I was using the mobile, like No, not mobile, just your hotspot or because the weather is nice, the labor is cheaper, you know. To live, I did a whole plan. If you have 4 kids, it costs you about 6,000 to 7,000 per month to live like a king, you know, like reasonable. फ्री नहीं पूरी हाँ? फ्री नहीं एजुकेशन नहीं एजुकेशन नहीं फ्री लेकिन वो सब कुछ डाल भी लेना तो फिर भी सस्ता पड़ता है. और यहाँ पे 6 तो minimum है. Food, insurance is less, right? There's no crime. So, all right, 11 o'clock candle. Let's see what happens to the 11 o'clock candle now. आ गई जी 11 बजे वाली कैंडल थोड़ी थोड़ी उतर रही है. Take this for her. So again, Monday at 6 o'clock, I'll do the class.
So live class. You have topics, write it down, ask me. So 6 नहीं सर crazy हूँ इतना crazy नहीं हूँ पागल बिल्कुल. So no, issue is around 6 p.m. 6 p.m. I'm planning to maybe delay for 1 hour because some users last time said they were working and they couldn't make it at 6 o'clock. So maybe 7 to 9, we'll push it, but I'll announce it that, hey, when is the class for next? Because again, you have to understand, I have to do from Nova Scotia all the way to Vancouver. Then I have users sitting in UAE to New Zealand. All the way globally they come, right? So, and there's only one of one. So there are sessions we're planning. So I will do maybe one particular time for Middle East, one for Europeans. So trying, that's why I really enjoy the time in UAE. That's globally works for quite a few people, like in terms of again back to 403. It's Sir, what should be our ratio कितनी होनी चाहिए जैसे हमें एक टिप के लेना है तो कितनी रेशियो होनी चाहिए 3 ग्लास ट्रेड कौन सा वाला है ट्रेड कौन सा वाला है जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल नास्डैक में हमने 3 टिप नहीं नहीं ट्रेड पहले बताएं रैंडमली तो एंटर कभी होना ही नहीं है ब्लैक कैंडल में 5 to 34 बन जाता है because the next black candle so 20 profit 34 stop loss because you have to wait inside until the next black candle. So if you're doing black candle trade, if you're doing 30-20, black candle appears after 34 ticks. So बहुत ज़्यादा आपका है, almost 40 ticks. So black candle has a new formation every 34 ticks from higher. बहुत क्लोज हो जाएगा आपको मोस्ट एक्सचेंजेस 4 टिक्स से पहले नैस्डैक करने ही नहीं देती ब्रोकर्स. So they will say that you are scalping too fast. It's called high frequency trade. They won't let you scalp Nasdaq that fast. Even live में ही बंद हो जाता है. So at least take 5 points or 3 points. 3 times 4 12 ticks तो रखें at least Nasdaq में. सब 2 ticks तो easy हो 2 ticks तो है लेकिन easy हो रहा है. I tried with 12 and compared to 8. it's the word is commission. Remember, you're paying the commission. In a live, they like that. You're paying every time so much commissions, $3. In funded companies, they have to cover your commission. They don't want you to trade that fast. They don't want to do like 3 ticks. 3 ticks, 4 ticks, because you will go in again. So it's all about commission. Live will like us. Live is your own money. So it's coming from your Pocket. Or a 6. 10 मिनट से करीब ये तो एक
वहीं पर एक ही कैंडल पे खड़ी हुई है। सर एक बार आप सेवाक्सेस के बारे में बताएंगे। पूरी वीडियो इस पे, तो जूम की जुलाई 21 पे फुल वीडियो ऑन फिबोनाची बॉक्सेस। फिबोनाची बॉक्सेस पे रिप्लेस मार्च ही मार्च या कुछ आ जा मिल जाता है। निकलने का भी मौका मिल जाता है, घुसने का भी मौका मिलता है। यूट्यूब में नहीं सुपर एरियाज के अंदर। Which date is July? July 21st. July 21st, the 2-hour Zoom video has full. So we are building, that brings me a next good topic. We're building something called deep dive. I have videos of Daniel's and like last 5 years of recorded material. We're training our AI model. Their developers are working on few projects, taking a picture of 30, 20, many. So another project they initiated is called Deep Dive. You will just type a keyword and it will reference from me, Daniel, Happy, Murtaz. If they have any recordings, it will pull up to that exact time. Say, all right, let's say you have a question about Flowbot copier. Nobody wants to help. The system is closed. Nobody's there. You can go and search now. Like today's report, if anybody saw on Telegram, yesterday, last 3 days, we've been sending a 15-minute clip of what the floor was today. So it kind of gives you an idea, what did we talk about? Somebody who's in the evening that can quickly get a summary. So on Telegram, 3 days in a row, we're sending a 15-minute clip. So the 3 hours from 9 to 12, this gets recorded, and you have 2 users talking to each other in English that will tell you. So lots of things are happening. So just like you have where did you talk about Fibonacci boxes? Because it's the same 9 topics I've been talking for 3 years, or Daniel's been talking 18 years. That hasn't changed. Like tomorrow, there's a class number 1 or class number 3 for Saturday. Class number 3. It hasn't changed in 18 years. Same material gets, okay, starts with class 1, time dekha karen ji. ES kaise chalti hai. Class 2 gets into, class 3 gets into RSI. End of your class 4, you only know one thing, green to buy, red to sell. Nothing else. He doesn't teach any complicated truck. You come to the class, then you live, start explaining you how this all works. So if you have need to learn or need to earn, 2 different things. If you want to earn, sit down with Majid bhai, make $100 done, 2 minutes. हुआ आज चल रहा है, हो गया, ग्रीन है। ग्रीन तो नहीं। हाँ नहीं सर अंदर बैठ के नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो मैं अब आपको रोक रहे हैं आपने सेल्फ so हाँ बड़ी कोशिश की गड्डी चलाना तो वो भी मेरे को थप्पड़ ही मारेगा। So ideas like this mid band came from high, couple of points done, maybe micros, minis, but so yeah, आपके पास रॉक सॉलिड डिसिप्लिन। फिर आपको अवैस भाई के साथ बैठते हैं, वो हफ्ते में 1 ट्रेड डालते हैं। अवैस भाई हाँ हाँ थोड़ा सा हफ्ते का 1 ट्रेड है। दोनों में से एक ही बचेगा। वो आप ही वही बचेंगे आप। So पोजीशन वो जब पूरे हफ्ते में जब तक एक्सपेक्टेड हाई नहीं आएगा ट्रेड नहीं डालेंगे। He doesn't care S1, S2, S3, एक्सपेक्टेड हाई या एक्सपेक्टेड लो, बस है 1500 के अकाउंट को 1.5 लाख पे लगे, लेकिन हफ्ते में 2 ट्रेड डाल रहे हैं। तो 3 दफा फिर 2 दिन नहीं ट्रेड कर रहे हैं ना। आज कौन सी मौत पड़ी हुई है कि ट्रेड डालना ही डालना है। आज की बात बता था ना आपसे, ऐसे हो रही है ना। जब 5 साल पहले हम इसको कंप्यूटर बंद करके साइड पे बैठ गए, कंसोलिडेशन। सोचना भी नहीं ट्रेड देने। यस मैं उसमें घुसा हुआ हूं तो मैं मार तो पड़ेगी।
नहीं आप क्वेश्चन है लॉन्ग है शॉर्ट है? सर दोनों करके बैठा हूँ। अच्छा लेकिन हेज कहाँ कर रहे हैं, मीनिंग के विच प्राइस से, ताकि नहीं वो बात तो ऐसी है। ओके ओके चलती गाड़ी में चला। because the number is 16435 is मेरे को बता दो, मैं कागज लिखता हूँ। ये कल 21 दिया था ना आपको? और सर कल ही मैं आया नहीं आया। नहीं अच्छा हमने 21 कल दिया था ना कल। Sir, when you give that number, when 18 came, तो हाँ हमने ये नहीं समझा वैलिड नहीं हुआ तो उससे ऊपर जाएंगे। नहीं मैंने एवरेज निकाल दी 8 हमारा कल की क्या नंबर थे 18 से 22। हाँ तो मैंने 21 आपको बता दिया था, तो 21 रात को आई, सुबह 3 बजे आई। 18.75 पे मैं पहले देख करके नीचे आ गई थी। हाँ तो हमने कहा कि अब क्या चलो आपने कहा तो ठीक है, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने इनसे कम्युनिकेट किया, सुबह किया कि ये लाइव अकाउंट वाले हैं। मैंने कहा 21 लिए, कहते मैंने 20 पॉइंट लिए वहां से। Sir, but what I'm trying to say is that 6418 जब लग गया हमारा नहीं अक्टूबर का नंबर लग गया, तो ये नहीं होता कि दूसरे में रुके। नहीं वो ठीक है। अब हुआ ये कि अगर मैं लाइव देख रहा होता तो शायद मैं ऑर्डर उठा देता, मैं सोया हुआ था। वो 18 लगा, 18.75 लगा, फिर 21 लगा और मुझे ले आया। एक तो मैं 21 पे लगा के सो गए थे ऑर्डर। सुबह के 3 बजे अलर्ट आया और 7 बजे मैं भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन थे। मैंने कहा इन्होंने 20 पॉइंट रखे हुए थे। अब मैं अगला नंबर दे रहा हूँ 35 पे। अब संडे को आए, लेकिन फर्क है, he can hold a position forever. He doesn't have to close a position at 5 o'clock. So because it's a live account. So with 2 micros, you need at least $5,000 to be sitting there. So he walked away with 2 micros, $210. कुछ नहीं किया, 210 ही बने, प्रोसेसर कमीशन काट के इतना ही बना होगा, $210। तो 20 पॉइंट, $10 का 1 पॉइंट, 20 points came. And I said, if a week ago, because I'm coaching some live users too. So 1 week we got stuck in a trade. 1 week, Nasdaq, we got in at 22,980. यही नंबर था, नंबर भी याद है। So we got stuck. Market, so I said 1 micro, 1 micro था. Then we started averaging because we said, even though it's a big account, and then we really got our average out around 22,200. एक 4 माइक्रो तक पहुंचा दिया था एक हफ्ते में। Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday this week, price fell down. We all got out. We got out break even or as close to. These are called position trading. At that time, you're not caring कि price ने क्या करना है। अब जिस तरह मैं इनसे advice है, opinion है, that 6435 is a good number in my opinion to stay sell from. For how long? At least 20-25 points. Every chart it's outside. 30 minutes it's out, 60 is out, 240 is out, 1440 is out. So if he can hold long, but he has to close, all of us have to close a trade September 25. So we are position trading. Position trading does not care about just 5 ticks, 10 ticks, 2 points, 10, like 20 points. No, वो expected high अगर 4 से पहले आती फिर वो करते हैं ना। वो उन्होंने, he got a payout from Apex, he got a payout from Bullnox, he got a payout from Take. So, but he only trades only this level, R3 and S3. That's it. He says, I'm not going to go anything else. Which number he takes, the top? Doesn't matter, randomly. Meaning he has a very good eye. He will figure out, like for example, other day, we were sitting at 220. He was sitting at 300. यहाँ पे बैठे, अब हम 270 पे फंसे हुए हैं, वो कह रहे मेरे पर ट्रेड ही नहीं है क्योंकि, and you know what time that number came? Almost 3 o'clock in the morning. But at that time he had pulled the order. He said, I'm not going to wait that long. But exactly from 308 it bounced down significantly. So it all comes to, like some use. Sir, आज नहीं, अब तो संडे आ जाएगा। 6435. 6435 is my observation that 35. सर एक ये सेल कर रहा है ना, हाँ यस यही है सर, अकाउंट साइज पर डिपेंड करता है ना। आंखें बंद करें, कोई बटन दबा दें,
या $15 जाएंगे इधर या उधर. आप लोग ना होता ये कि I'll tell you a joke. A lot of people who come and see us, वो मरते हुए ना कहते हैं राफी भाई आखिरी नेल आप लगा दो. यानी कि वो बिल्कुल डैमेज हुए होते हैं, कफन जा रहा होता है, राइट, वो ब्लॉक्स, और वो कहते हैं एक नेल रह गई है वो भी आप ठोक दो. नहीं तो आप कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ नहीं नहीं नहीं. This is now a gamble trade. A gamble trade is, this is my advice, go to expected high, full Nasdaq छोड़ दें. So 23,500. Yeah, तस्वीर कर. Exactly. 23,500. Pick a full NQ, and I think you should be okay. माइक्रो दो नहीं नहीं सर, आपके पास 500 है, ये आपके बच्चों के बच्चे हो जाने हैं इसको पास करते करते. ठीक, तो इस तरह नहीं है. $500 को आपने या इधर डालना है या इधर, क्योंकि आप उसको डैमेज कर आए हैं. तो 23,500 में आपके पास एक नैस्डैक में एक ही चांस है, एक फुल मिनी. Because if it falls down at a speed of 30 points from there, let's see. So 30 times 20, $600, we can recover. So when you are on a very last like breath of air, only Nasdaq will save you, right? So ऐसा ही चल रहा है. और as biggest always issue is people who are desperate, they don't make it. काम करके अच्छा है कि नहीं ये पता क्या. लेकिन नैस्डैक के नंबर तो डिफरेंट है सर यही है. नंबर दिया हो तो मैंने यहाँ तो इनको दे रहा हूँ ना 23,500 दे रहा हूँ, 23,490 टू बी एग्जैक्ट. तो ऑर्डर वहाँ लगा दें एंड नहीं देखें, आई एम प्लानिंग होपिंग दैट दे विल. राइट नाउ वी आर at 416 now. Hopefully it will go there. That's all we are hoping for. नहीं नहीं, अगर आपकी रिकवरी होगी, सपोज करो $1,000 रिकवरी होगी, तो हम मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई. नहीं करना. डोंट यू थिंक यू वांट $1,000? नहीं तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा. स्टॉप लॉस तो सारा वो $25. Wow. So आपका 2,500 divided by 20. If market goes from 490 plus 25, then $15 is gone, right? So one सोता तो नहीं बंदा, रात 11 बजे तक जागता. then you will be successfully liquidated. liquidated successful. Yeah. So $500 is I've seen lucky people when they withdraw amount, only $100 left on Apex, they take 2 NQ, goes in their favor, फिर threshold बढ़ जाता है, right? So, but that's the only my personal opinion I can give you. So, अभी क्या अपने पैसे चल रहे हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे we had a deal for 20 days. आप डील ब्रेक क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ खुद से क्यों ट्रेड कर रहे हैं? सर पता क्या है, अभी ना मतलब हाथ रुकता ही नहीं है ना. नहीं डील इनको दी थी कि 20 दिन उन्होंने माजिद भाई के साथ बैठना है और अपना ट्रेड नहीं करना, अपना ट्रेड हाथ में नहीं लगाना. नहीं उन्होंने ट्रेड ही नहीं आ रहा, क्या ट्रेड कराया आपको? चलिए वापस इसी ऑफिस में आ गए. नहीं मैं वो माजिद भाई नहीं कंट्रोल कर पाए तो like 3 people, like we have a floor, I lead here, we have Majid bhai, we have Murtaz, we have Happy. सबसे जो रफ है ना, अगर आप हैप्पी के पास बैठ गए ना तो एज में सबसे छोटा है, डांटने में सबसे ऊपर है. नो लेकिन मुर्ताज भी है ना, वो आपको नहीं ट्रेड करने देगा खुद से कि फाइनल गिव अप करने के लिए मैं सबके पास नहीं हर एक से एक नेल कॉफिन में डलवा रहे हैं कि यार मैं ला ही दियो. दो ट्रेड्स बाकी सब सक्सेसफुल है. No problem, dude. Thanks, sir. No problem. But he only does Nasdaq. Only Nasdaq. For Nasdaq, you have to wait a lot. For example, we are waiting for 490, and 423 doesn't go. So how can I trade? Yes, whenever I feel a little bit urged to trade,
I'll look at 30-20 overbought, maybe put 1 micro, 2 micro, but that's about it, right? So price is not breaking 350 or 425. It's 367. Come on, go down like crazy. So trying to build the momentum slowly up to the new numbers. Question, congrats. Now, let's see if it breaks previous candle of 423. That's today's all-time high, morning session all-time. Look, even pressure is down, base is down, but the price keeps climbing. Thank you, sir. Take care, G. Oh. And ES is again stuck. No, 12 बजे भी करीब एक momentum तो आता है. Yeah, fourth. So that's the candle I'm now waiting for European close. Let's see which way it goes. Trump says trade deal with Canada will not be reached. ट्रम्प ने कुछ बोला अभी? सुबह की बोला. फ्रॉम मार्केट इधर उधर होगी बेवकूफियों वाली बातें टैरिफ लगा देगा फिर कनाडा पे कनाडा के टैरिफ्स का क्या हुआ अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ खामोशी है अभी तक तो खामोशी. असेंबली लेवल क्या है? असेंबली लेवल क्या जरूरी? तो मेल्ट अप वाटर मेल्ट अप. आपने किस पर ट्रेड लगाई मेरे कोई ट्रेड नहीं लगा रही, मैं वेट का नंबर का ऐसा उसके ऊपर Nasdaq नहीं वही ये इसका फायदा ये है छोटे छोटे पैसे नहीं बना सकते लेकिन पता नहीं वो LHT क्या होता है थ्रेशोल्ड Yeah, live trailing. अपनी मर्जी से करते रहेंगे इसमें मैं ट्रेड लगाऊंगी. अब डाइवर्जन के बाद मिड बैंड है. Diversion means indication that the trend might change. पर ट्रेड नहीं किया. वो पूरा मिड बैंड चल रही. डाइवर्जन बहुत छोटी सी है नहीं ऐसा give you tour about ये जो पिछला है ये वाला. देखो S&P में डाइवर्जन लगी है. छोटी सी थी It made third candle जब यहाँ पे बनी third हाँ black candle बन गई. Mid band यहाँ था. Had you taken a mid band from here, it still give you 125, 150, 175, 200 bucks. Now it's come down again. But the reason I didn't take this is because of डाइवर्जन मेरा मिस कर गई 2 टिक से डाइवर्जन फिर आया तो अगली बहुत कैंडल छोटा फिर नीचे आ गई मैंने काट दिया क्योंकि वो हाफ ऊपर ले गई थी 3 टिक ऊपर चलेगी मैंने कहा अभी मिस कर गई छोड़ I normally have also do it with that. तो उसमें रुकना चाहिए अगर वो पीछे निकल जाए 3 टिक ऊपर Diversion के बाद आप उठा take it. ले लिया था पर वो मिस 2 3 टिक से लगी 2 टिक से मिस
आप किधर से कर देते हैं? आप टेक प्रॉफिट ओपन छोड़ देते हो? मैं ओपन कुछ भी नहीं छोड़ता। नहीं आपके ना 200 दिन तो आपको हमने तो 12 का लगाया 12 मिनट का तो $100 पे निकाल दो। नहीं वो तो हाँ मेरा टेक प्रॉफिट जो होता है वो Yeah, it's 6 after 6 o'clock. फिर आपकी Yes, yes. See, my risk is first 10 days. ओके That's the only risk I have. First 10 days. After that, break even when you The more you will sit, the more you will destroy your account in this market. सुबह 7:30 बजे अगर कोई बैठना चाहे इसके ऊपर तो रात की मार्केट चल रही होती है। और नाइट सेशन की जो होते हैं ना numbers, हाँ वो देख लो बस। यूरोपियन मार्केट एक्टिव होती है बहुत। अच्छा वो हमारे 12 बजे तक चलती है दोपहर के 12 बजे बट यूरोपियन मार्केट्स 3 बजे से it's very smooth in the morning. If you catch the drift, because it's either making a night session high or a night session low. So after 9:30, it goes to test the session, and then manipulation starts. But if you are doing early in the morning, it's pretty much more. It's a directional game. Technically, at 7:30. 420. All right, let's see. Breaks today's high. Morning high, sorry, I should say. Night session high is 431. 4:23. 442 is the night high. 4:42 is higher. 442 is the night high. No problem. It's not a big. अभी कहाँ से ड्रॉप करना है आपका? 416 पे है हमने। 420 में है। ये ब्रेक आउट क्वेश्चन इधर उधर 428. Finally, we got something. नीचे जा रही है 422 पे आ रही हाँ नहीं वो नया हाई लगाया ना मॉर्निंग का 428 after a long time. 480, 490. नीचे आ गई ना सॉरी Nasdaq Nasdaq. ये तो बिल्कुल नहीं है इसमें $200 बनाया Nasdaq. yes मैंने 3 टिक करते जो Two mid bands going upward on ES. बन गए हैं आप क्या हाल है लेकिन सिंपल है छोटी ट्रेड पे जो है छोटी कैसे पकड़ना है चार टिक आ जाएगा तो फिर बाकी होल्ड तो बस वो देखना मुझे अभी होल्ड कर लेगा तो उसके बाद खेलेंगे होल्ड करके निकल जाएंगे So you are not की बात अभी जैसे मैंने आपको बताया $200 देंगे we have to keep waiting for it. आप
use this mode method. We just want to make money in there. Yeah, I think that. If you want to learn how to trade, develop a skill. तो ES को बेस बनाओ, फिर बाकी सारे Nasdaq, GC currency आ गया. Let's see currency का क्या बात है? Even you want to consolidation of freedom, see बेस तो आपका सारा ES Nasdaq हो गया ना. नहीं कर लेते क्या लिखा ऊपर? That's a very serious thing. That's the actual thing. वो आपकी प्रॉब्लम है. वो सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है. वो सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है. सिस्टम कह रहा है वेट वी गेट पेड टू ट्रेड. सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं तभी तो ऐसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है उसको. सर आप ये देखें. Yeah, perfect number. ये देख रहे हो? ठीक है. उस अकाउंट को मैंने बंद कर. मैं दूसरे अकाउंट पे. इसमें कितने? अभी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कर देगा. अब डॉक्टर भाई is waiting for a number. 490 से पहले घुसेंगे नहीं. बैठा है मैं इंक्लूसिव लोगों के 490 के पकड़ मुझे बात बताओ. बस की वेट कर रहे हो, बस लेट हो गई तो क्या खुद कदम चलना शुरू कर दोगे? उसका आप रोज तो बहुत ठीक है आपकी बात है. फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है. Trading is all about patience. It's all about patience. If you're not patient and you're not disciplined, after you Really trade lean. Because the birth to be stage like a simulation. So the very simulation is only. Monday will take the Take off it on. अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता है, अगर मैं आता ही ट्रेड करता हूँ तो क्या तो $100 कम में आता है.
नहीं 100 बन गया बंद 100 बन गया तो बंद कर दो देखो every time I lose money I take a break every time I make money मैं कोई चेन तोड़ रहा हूँ पैसा बनाने पे कोई ब्रेक हो पैसा लूज करने पे भी you keep walking कैसा है ठीक है वो रैंक की तो पहुंच गई है ना तेज बढ़ी हुई है ये राजस्थान ये सिमुलेशन पे जैसे पैसे बनते हैं वैसे किस जगह पर काम करते हैं इस तरीके सर ट्रेडिंग बंद कर दें, स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होंगे, प्रॉफिट खत्म हो जाएगी। लाइक इसमें आपको इसका एक रूल है, मैं 20 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और 3-4 साल से फ्यूचर्स कर रहा हूँ। फ्यूचर्स की गेम में सबसे पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन 13 other methods. Price will hit like a brick or like a roof. So today I'm waiting for 35. Every day I come in and look at what is my next resistance, what is my next support. Even a mid band is a support trade. Price comes down, it's a support level. 50%. Fibonacci or support and resistance, mid band. So the earlier you can learn about and wait for it. So if it doesn't come, It's not ke karna hi karna hai, right? So you will make your life easier. What happens is everybody at 9:30 start looking at you on a longer term. Scalping is okay. Go in, take 2 points and done. Problem is you're scalping all the time, and then you will end up losing because market changes dynamics quickly. So either you are good at scalping and you have a daily target of 2 or 3 points, or you're good at position trading, or you're good. You one day you're scalping, one day you're position. You have to decide. Yes, okay. Like I am waiting for religiously this number to go to 23,490. Whether it comes now or whether it comes Sunday at 6 p.m., I will wait for that number. Like she said, we waited. We were waiting for 21, both of us. Actually, 12 other people. 21 were waiting. I don't know when it came, when it went. Right? First time we checked with each other, did you take it? He replied, no, it just missed by a tick. We went to sleep. 21, we sold. We woke up with good chunk. So wait करना होता, wait. लेकिन ये कि अगर जैसे आप 21 के लिए वेट कर रहे थे तो 21 पे आप Sell sell किया। के लिए जो है टिक लगा के आप प्री ऑर्डर कर दे, मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं 490 पे ऑलरेडी, और 35 पे भी ऑर्डर लगे हुए हैं. So when price reaches 35, automatic, now at least some of us, we can hold the trade longer, right? क्योंकि डेमो में फायदा ये है, आपके पास $50,000 है, वो गिरती भी है ना -4,000 वापस आ जाती है क्योंकि स्टॉप लॉस का कंसर्न ही नहीं है. तो रियल में आप 5,000 डालते हो, 2,000 डालते हो, डेमो में तो फिर बनेंगे ही. डालें 50,000 का अकाउंट, एक हर मिड बैंड चलेगा जी, आ जाती है प्राइस, वो आ ही जाती है घूम फिर के, -4,000 के बाद भी आ ही जाएगी, डेमो है ना. So and real money is slightly different, right? So here's my 2 cents on trading. No problem. So take it. $15.10 की एक कैंडल कितने मिनट की होती है? The 15:10, one candle is 10 ticks. Minutes like. Sorry? कितने $125 की या $12.50 की, डिपेंड करता है 10 ticks की वैल्यू. जब उतने टिक हो गए तो कैंडल बनेगी. Yeah, 10 ticks के. No, it's not a price. It's tick base. Tick base. So it's 10 ticks and that is 20 ticks. Correct. Basically, it's a bigger time frame and it's Yeah, and not time, ticks, 20 ticks. oh,
It's not, nothing is about time. If you look, one candle can move up and down until the next 10 ticks or previous 10 ticks. By the way, we have let go of 2 of our staff. If you message them and you get some harassment, just text me. Because a couple of guys were fired yesterday because of they were not taking on the right support proper. So if you message one of them and somebody nasty reply comes, just let us know so we can take some legal actions against them. Because nobody should be abusing our students. Because we reshuffle the staff. Because Sukhman was let go and a couple other boys were let go. Last thing we want is we can't tolerate BS. No seminar tomorrow. Sorry, no sem. No, I mean mine. There's no my seminar tomorrow. Daniel is doing his classes, seminar, 1:00, everything. So that's slightly different. क्लास के लिए ऑप्शन या क्लास आई थिंक 3 or 4 so ठीक है हाँ नो प्रॉब्लम जस्ट जब साइन अप करें ना पर कनाडा लिंक so the billing structure will get Canadian put Canadian address नंबर टेक्स्ट कर दो yes कर दें ऑस्ट्रेलिया से भी स्टूडेंट है सब पूरी दुनिया से Australia, New Zealand, Vancouver. You have internet, you have excitement of trading? इंडिया की मार्केट में भी करते हैं Ninja के अंदर नहीं. We need to connect to a data first. If you want to look at like market, so there is a few provider, forex.com, barchart.com, interactive broker. If they support Indian stock, yes, this will work. It will do the analysis for you. Come on, yaar, 400 को तोड़ो. You should design a cursor where you can move your price according to Yeah, that's move it here. That's called having $1 billion. You wherever you will put the order, it will go there. Trust them. That's cool. Price and try to move it. Yes, correct. As $1 billion, you will have institutional rights. Come on. अब जैसे मैंने बिग बैट लगाया था मेरा उसने 3 टिक ऊपर चला गया टच नहीं किया नहीं, वो पर पूरा- अगले नेक्स्ट उसमें वो आ गया तो shall I wait or what No. is the right position? The main, if this midband I don't take, this is the one candle, I don't take the same candle. Because it will get a bit tricky. Order hit नहीं हुआ नहीं हुआ छोड़ दें कैंसिल कर मैंने दें cancel क्या किया हाँ पर on the next moment Oh, yeah. वो It's नीचे okay. आ गया। It's आ सकता because it's that first attempt that's coming down. Yeah.
hopefully we're hoping that it will pick you up and go back up, right? So, मैंने अटैच भी कर दिया था ना उसके साथ yeah, but आप एक tick से रह गए, cause, हाँ। right? So, पर फिर नेक्स्ट मोमेंट अगले जीरो पे नहीं होता वो 1 पे है या -1 पे है yeah, क्योंकि एक tick नीचे है, ये ऊपर है ना, जीरो पे तो उस प्राइस पे चलती नहीं है ना. So जब भी होगा one tick, 1 टिक ऊपर up, yes, correct. पहले जीरो पे उतना नहीं था No, a problem is if you look, it's giving random number like 63, 25 because it's calculating an average. So because the ticks work with 25, 50, 75, that's why it needs the tick value. Struggling. So this time it worked on Fibonacci great. It retraced from 64.16 as our, you know. मिडबैन हमें एक टिक ऊपर लगाना चाहिए. एक टिक नीचे, डैनियल भी कहते हैं 1 टिक नीचे. अगर बाइंग है तो 1 टिक नीचे लगाए ना, और सेलिंग है तो 1 टिक ऊपर. पर दिस होने के चांस तो बढ़ जाते हैं सर है ना बट लॉसेस भी तो उतने ही कम होंगे ना 8.5 के. तो 4 तो ठीक है 1 tick is okay. अगर वो टिक कर लिया तो प्रॉफिट में तो उतना ही देना ना तो स्टॉप लॉस कम हिट होगा अगर एक टिक से बच जाते हैं अब जैसे इसका ना मैंने एक वो निकाला था ना कितना किलो पे कि उसमें से 3 पॉइंट रह गया. अच्छा मैं ऐसे बहुत वॉच कर रहा हूँ डीप उसमें देखे जाते हैं 6450 नंबर था वहाँ से 12 पे आया. अच्छा उसके बाद दोबारा 50 मीटर स्केल पे 12 पे आया. दोबारा क्या कोई नहीं करना देना दोबारा में नहीं एक पहली बारी में लेना तो बढ़िया पहली में आ जाए. ऐसे तो है रात को मैंने वो करा था 43.85. के हिसाब से कर रहा था रात पे 150 बना तो मैंने चल यार पंजाबी के उसमें नैस्डैक में मिल गया 700 का लॉस हुआ. मैंने फिर उस पर कॉन्टैक्ट्स बढ़ा के ना नीचे आ गई पॉकेट को टच करके मैं कहा नीचे आएगी हमारी. मैंने वहाँ पे दोबारा एंटर That's a too fast. Too fast for us. वैसे तो वो बढ़िया है आपको टॉप अप करवा जैसे करते हैं ना टॉप अप Slow market. All right, Trump said something. Rebates are coming to lure Americans. Let's see if this is going to push it up. Or 20, 423. Let's see if it breaks 428. Wow. In like 36. Multi gun में होता. Yeah, come on. फर्स्ट डे इतनी स्लो मार्केट देख रहे हैं जब से देखना शुरू करा. फिफ्थ डे में ट्रेडिंग कर रहा हूं.
Thursday अभी तो 500 days जब होंगे ना फिर आप really 90 days के ना पूरा साइकिल मिल जाता है पूरा साइकिल 90 days of trading ये मेरी ट्रेन में आती है 100%. 90 days, you will see interest rate, CPI, PPI, everything 90 days will one contract to another contract, and yes, kind of either you leave it or you say, this is okay, I can do it. So, because market moves, मुझे अच्छा लग रहा है that's slowly it moves. अगर आप ठीक चलते हो ना आपके अगेंस्ट नहीं जा पाए I mean, चला भी जाता चला है तो जाएगा हाँ पर लेकिन आपका ऑटोमेटिक लगे हुए हैं ना वो दिन कह रहे हैं परसों जबकि बाद में पता नहीं उसने मेरे को तो पता ही नहीं 72 मेरे दिमाग से कहाँ आया नहीं वो तो तो कहते 72 नहीं, वो- मैंने ना कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं समझा वहां पे वो लगा दिया सर no, the number of 72 came from our फिर फूक का था Fib trades. वो फर्स्ट टाइम मैंने आई फॉलोड अदर पीपल नॉइज नॉट माय इंटरनल नॉइज फिर बहुत जल्दी क्विक हिट था उसका ना जाके नहीं पर अच्छी टाइम बात दिया रही ही नहीं। आगे फिर मैं उसमें दो मैंने मिड बैंड पकड़ के मैंने कर मेरा बचे गए पता नहीं मैं कुछ गलत करूँगा ठीक करूँगा ये ना उसमें हुआ था मैं रिकवर नहीं कर लिया था बाद में हाँ मैं निकल कर फिर बात 23 तक रुक जाते हैं पकड़ के ऊपर करो तो मैंने डाल दिया उसको मैसेज आपका नंबर ठीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे कॉल करें ये कमीशन मेरा बाद में काटते हैं बिकॉज द नंबर आई सी एट द क्लोज नेक्स्ट डे चेंज Yeah, it changes. Okay. Yeah. है? अभी हाँ ग्रॉस दिखा रहे हैं सुबह इसमें कुछ और नहीं मुझे तो रात को मेरे पैसे खा जाएंगे सिस्टम मेरा जैसे लेकिन नहीं है मेरी उसमें से कमीशन राइट में काट लेते हैं खून पसीने की कमाई खा जाती है इन्वेस्ट कर देना मैं के लोग और मैं आना सकता हूँ कल मैंने दैनिक का को आना से लोड करूँ ठीक है सॉफ्टवेयर देखो क्या आया करेगा या 42 आ गई मेरे स्क्रीन में दिखी Nasdaq को ऊपर है कंट्रोल 2020 के अपर बैंड कोई नहीं टूट रहा देखिए कितना तगड़ा गैप ट्रेड आया है Nasdaq में 2020 में यहाँ पे भी 421.
3 minutes, European candle, 12 o'clock. Let's see which direction do they take it. Then we'll decide. एक मेरा मिस हुआ एक में इंडिया में तो आई एम ओके मेरे टारगेट ये इसमें 30 है और फिर जब वो पानी में गिरा बाकी सब कुछ मत बैठो बच गया बॉडी का पेट में सवाल कैंडल बन गया और देखो वो काम बन गया नहीं 28 गोल्ड तो इनकी 14-40 नीचे आ गया 17 पे आ गया तो सब लोग गोल्ड में लगा होता है हाँ 33-27 पे है गोल्ड हाँ 33-28 यहाँ से एक लेके छोड़ देते हैं यार सबसे नीचे आ गए 17 तक जाएगा कि नहीं 27 17 में बॉर्डर लगा के बॉर्डर तो नॉर्मली S&P के अगेंस्ट चलता है क्या चीज? नहीं मुझे मालूम है honestly because it was all time high. All right, 12 o'clock candle does open. Let's say which way does it go? 422. Let's see, it's trying to make a green. Oh, so 426. So 1 hour candle is green, 30-minute is green. All right, so no major change. Let's see if this is an actual red candle. Friday आज तेज होना चाहिए आज उल्टा हुआ इसे कहते हैं मैनिपुलेशन There is 1201, nothing major change. Let's see. All right, I'll wrap it up. Thank you for coming in. बैठे हुए सर 12 बजे आप कौन सी 240 वाली कैंडल 240 वाली क्योंकि 12 बजे हर कैंडल इंपॉर्टेंट हो गई 30 मिनट 15 30 60 240 ये 12 बजे तो दैट्स रियली क्रिटिकल हो जाता है सो इसको देखते क्या सिर्फ देखते हैं कि वो 12 बजे एक तो यूरोप क्लोज हो रहा है और स्पेशली और सुबह 8 बजे वाली कैंडल तो अब फिर शाम के 4 बजे वाली तो ये सारी 4 आवर वाली जो है ना थोड़ी सी हमारे फेवर में जा सकती हैं कि वहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा गिर सकता है या
अगर लॉन्ग में है तो शॉर्ट जा सकते हैं, शॉर्ट में है तो समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम। नहीं, ये हर 4 घंटे वाली 4 आवर की कैंडल है ना। इसलिए उसको निकाल ही देना। मुश्किल लग रहा है अभी, ये निकाल सकता नहीं है। 50 minutes वाली तो बाकी तो वगैरह है। So, all right. So, GC 1440 पे मिड बैंक को टच कर दी। मैं विंडोज पे वो जो उसका नीचे छोटा बैंक है टाइम नहीं है ये आउट ऑफ बैंक था। All right. See you guys. मार्च में